Assalamualaikum students. Well, today we will start with another device known as bipolar junction transistor, and I do hope that you understood what we talked about PN junction or diodes in detail so far. Today we will be discussing what bipolar junction transistors are. In abbreviation we call them BJTs, and then we would discuss how the transistor acts when operated under forward bias and reverse bias, and in that context we will be defining three basic biasing configurations, namely the common base configuration, the common emitter configuration, and the common collector configuration. The bottom two topics, namely the transistor currents, that is how current flows in transistor and what are the current components in a given transistor, and their hybrid parameters. I think I will carry on these two topics for my next lecture because they are quite detailed in their own right. So today we will basically restrict ourselves only to the physical analysis of the transistor and its biasing modes. As usual, my current slide gives you the reference from which I have borrowed most of my stuff and the diagrams, so that whenever you need to go back to the basic reference, you could consult this slide. So here is the famous circuit symbol, which you might have seen on the front page of many textbooks in electronics and in circuit devices. This is our famous bipolar junction transistor, also known as BJT's device. You notice that there are three terminals, three basic portions of this bipolar junction transistor, namely the emitter region or the emitter contact, and then the base region and the collector region. But this slide simply gives you the very well-known symbol, circuit symbol for bipolar junction transistor. Now, what are the objectives of studying the bipolar junction transistor? Well, to begin with, we would emphasize that BJTs or the bipolar junction transistor is one of the very simple device in integrated circuits electronics, and various mode of its operation will then establish whether a given bipolar junction transistor would act as an amplifier or as a switch, and so on and so forth. Now this common device made from two back-to-back joined transistor back-to-back diodes, semiconductor diodes, PN junction, was first designed historically in 1948 by Bardeen and Shockley, and there are two kinds of BJTs, namely whether the intermediate or the layer between the two emitter and collector junction is N-type or P-type, and accordingly therefore they are classified as NPN or PNP transistor, depending whether your emitter is P-type and your base is N-type, and then collector finally is P-type again. We can show this schematically in another circuit symbol diagram, as well as schematic illustration of an NPN and PNP transistor. So here I mention it again that a transistor, bipolar junction transistor, consists of three adjoining and alternately doped, as I just mentioned a minute ago, regions of semiconductors, namely the emitter E, designated with the letter symbol E, the base with the letter symbol B, and the collector with the letter symbol C. From now on, in all our circuit diagrams and schematic illustrations, we will be calling them as EBC, namely E for the emitter, B for the base, and C for the collector. In the physical construction or the fabrication of the bipolar junction device, the base region B is deliberately made narrow, and the doping is less compared to that. It is not very highly doped as compared to the emitter, because the basic idea of the transistor action is that the principle of the transistor action is, whether it is NPN or PNP, that the current should be transported from the emitter all the way
to the collector by the carriers which are present in majority in the heavily doped emitter region. I shall show you this in a minute. So a transistor can be utilized depending upon its circuit operation as an amplifier, as well as a switching device, and also we can use it as a voltage controlled switch. Because why the transistor can be utilized as an amplifier? It depends upon the mode of biasing, which I shall illustrate in a minute, that we can have physically the structure of the bipolar transistor is such that we have a base region in the middle, and on the left side of the region, on the left side is the emitter region, which could be either P or N, depending whether the transistor is PNP transistor or NPN transistor. And on our extreme right is the collector region, where the carriers are collected, which have been emitted from the emitter under a forward bias junction, emitter base junction. Now, how does it act as an amplifier? Because the current, if we bias it in the common emitter configuration, then the base ratio of the collector current and to the ratio of the base current can be increased, and you can get a DC output signal as well as an AC output signal if we connect a load across the output circuit, and that way we can amplify the current flowing in the output. The input current can be amplified, and you gain a lot of current in the output circuit. So this is the basic statement for an amplifier circuit, in which diode can be employed as an amplifier circuit. And then we can use transistor as a switch, because if we apply a voltage to the base in such a way that emitter base junction is reverse biased, and obviously we have learned in a diode, semiconductor diode, PN junction, that in a reverse bias junction there is no current flowing across the circuit. Therefore, if we reverse bias the emitter base junction, obviously there would be no current collected in the collector region, in the third region of the bipolar junction transistor. Hence we can say that the transistor is off, and we can utilize this property of the active mode of the transistor when the emitter base junction is forward bias, and the off mode when the emitter base junction is reverse bias. Therefore, the transistor is acting alternately as a switch when it goes into a forward bias mode or a reverse bias mode. Similarly, we can use it for as a voltage control switch, because in computers the transistor is used in this fashion. Also, we can utilize a bipolar junction transistor in a different manner, where the carriers flow due to the field applied across two terminals, and this device, that is the field effect transistor, will take a few more lectures in our current series of this course. So FETs are yet another device fabricated from transistors, another way of manipulating the transistor operation. So to begin with, we can say that just like diode operation, the transistor operation can be utilized for current amplification, for switching, and for constant voltage devices and field effect junction transistors. Now let's try to understand first the simple operation of a bipolar junction transistor, that is a transistor in short, and how the junction transistors can be designed to operate for a given purpose, for a specific purpose. This slide shows you a very simple structure, physical structure, that how a semiconductor transistor is made or how it is fabricated. Fabrication is a terminology which is mostly used in the industry where transistors are made. In electronic research, we use it as fabrication. Now, in this particular slide, you have noticed that I have illustrated my design emitter on the top, and then
in between you notice a base which is slightly less pink as compared to the emitter region, which has been made more pink for you to distinguish between the emitter and the base. And finally at the bottom I have shown you a white, that is an empty box which is designated as a collector. Now the biasing, the doping of this NPN, in this is an example of an NPN structure. The doping is such that emitter is always doped very heavily, whether it is a PNP transistor or NPN transistor. The idea behind heavy doping of the emitter is because emitter is the region from where your carriers would flow under a forward bias junction, of course. That is, when the emitter base junction is forward biased, if emitter is heavily doped, whether it is p-type, that is in a PNP transistor, or whether it is an n-type in an NPN transistor, then there are lots of carriers in the emitter which would flow under forward bias from emitter to the base region. As I mentioned before, the base region is made narrow so that there is negligible or practically no recombination of the carriers coming from emitter and recombining in the base region, because base region now is alternately doped as compared to the emitter region. So the base region is narrow and less doped as compared to the emitter. So majority of, or a bigger chunk of the carriers from emitter would pass through the base and go to collector, where even though the collector is reverse bias, it is favorable for the carriers coming all the way from emitter, and hence a large current will be obtained, can be collected at the collector, in spite of the fact that according to our basic understanding of the PN junction, it is the base collector junction is a reverse bias junction. But nevertheless, in a transistor, a large current flows in the base collector junction, which is a reverse bias junction. But that is not against our philosophy, because these are the carriers which are coming all the way from the collector, and the reverse field present in the base collector region is favorable for these carriers. And this principle of transistor action, which I just mentioned in very simple terms, will become clearer as we move on and show some schematic illustration of how the transistor current flows in a given transistor. Now the top diagram shows you the NPN transistor, where plus symbol indicates that the N-type emitter region, which is pink, is heavily doped compared to the base type P region, which is less pink. And then finally at the bottom we have the white collector region, which is even lesser than the base doping. So we have the highest doping in the emitter region, then less doping and in the base region, and the least doping in the collector region. In other words, the collector is the least doped region, but yet it is quite wide as compared to the base and the emitter region. So this is the physical structure of bipolar junction transistor. How we obtain, I had listed 3 important fabrication techniques in my diode, in the series of lectures on diodes, where we could use the planar technology for the fabrication of BJTs, or the ion implantation, or the diffusion. So these 3 techniques which we mentioned already can be utilized even for the fabrication of the bipolar junction technology. Now about the terminals, that is the contact leads across which we apply, through which we apply the biasing, and through which we collect the current, control the current. So on the left side you see emitter base junction, which is a junction between the base and the emitter, and on the right you see the collector base junction. An arrow indicates the collector base junction, which is the junction between base and collector. Just as we mentioned in our diode semiconductor PN junction, it is the same physics, it's the same terminology. We would have a middle region, depletion region between the emitter base diode. Similarly, we would have a depletion region in the base collector junction, and the junction depletion region properties, or the parameters characterizing a depletion region, would behave in the same fashion.
If emitter-base junction is forward bias, then of course forward bias characteristic would be found in the emitter-base depletion region, and similarly base collector region in the normal mode of operation is reverse biased, and therefore in the base collector depletion region the characteristics of a reverse bias junction would apply. Okay, so now we can move on and show the circuit symbol, or simply the symbols for a PN and a PNP and NPN transistor. On the extreme right side you see a PNP transistor with its 3 leads designated respectively as emitter, base and collector. The center would always be the base, the bottom in this case would always be the emitter, and top would be collector, whether the transistor is PNP or NPN as shown here. I have chosen 2 different colors to indicate whether it is P is the dark brown, and yellowish color I have chosen. The N-type material is the dark brown, and for the P-type region I have chosen a lighter color. So on the extreme right is your PNP transistor, and then in the middle we have an NPN transistor, and similarly I have tried to indicate the region, the metallurgical point where the doping changes abruptly from N to P or from P to N respectively has been marked with the arrows as the base collector junction or the base emitter junction, and therefore at the junction we have all the properties which I just mentioned. And then on the left side again it is the same schematic illustration of the top diagram, which I have tried to blow a little bit, magnifying a little bit for you to understand it properly. So we have on this transparency I have tried to show you the physical structure of bipolar junction transistor in 3 different ways, in the symbolic with the symbolic representation as well as the layer by layer fabrication method of fabrication, layer by layer fabrication method for the transistor. Here is a bigger amplified version again for you to realize, to understand fully what or in what way the transistor is going to act and how it is labeled. The bottom layer, after subtracting, in the blue you notice a substrate. Now after eliminating the substrate, now I have chosen to show you only the physical structure of the emitter based of the PNP, I'm sorry, in this case it is NPN transistor. Now the bottom layer is an N-type material. The center, that is the base sandwiched between 2 N layers, is our base, which is P-type in this case, and the top layer is our emitter, which in this case is N-type. And accordingly the 3 leads have been labeled as E for the emitter, B for the base, which is connected with, as you can appreciate, the middle region is connected. The terminal B is connected with the middle region of the semiconductor P-type material. Then the C terminal is connected to the bottom N-type semiconductor, which is designated as collector. So we have collector at the bottom, in the middle we have the base B, and at the top we have an emitter N. So this is an NPN schematic illustration, very simple illustration of an NPN transistor, also marking the EBC 3 emitter base collector terminal. Of course we have the flexibility of controlling the areas of junction areas of the 3 regions, emitter region, the base region and the collector region, and similarly we have the flexibility of the doping concentration. So we can manipulate, number 1, by controlling the area, the size of the 3 regions, by controlling the doping concentrations of the 3 regions. So by manipulating or controlling these 2 parameters, we can choose a particular transistor or fabricate a particular transistor for a given operation. And I mentioned 3 or 4 different ways in which the transistor, bipolar junction transistor, can be used. Namely, the most common operation is as an amplifier, then we have transistor as a switch, and then we have the transistor as a voltage controller device, and finally
after studying the bipolar junction transistors, in the next few lectures we will be talking about a different kind of biasing which would lead us to the field effect transistors, MOS, metal oxide semiconductor transistors, and so on and so forth. So basically, if you appreciate from this simple circuit diagram, schematic illustration of the transistor, it is a two-junction, back-to-back two-junction device. If you look at the top, if we come down vertically from top to bottom or go from bottom to top, you will notice that basically there are two diodes put from joined together or joined back to back. So we have a bottom PN diode or we have a top NP diode. So these two diodes then comprise or give you the transistor operation. Here is another illustration, schematic illustration along with the schematic symbol representation of the two type of diodes that I mentioned earlier, that is the NPN transistor and PNP transistor. In the NPN transistor, as I mentioned before, we have P-type region sandwiched between our emitter and base region. And mind you, in the NPN transistor, that is emitter base collector, I have not indicated the relative doping, but that has been taken care of already, and in a minute I'll give you roughly some idea of the magnitude, that is density of the doping that we have in the emitter base and collector regions respectively. There is another important point that I would like to mention on this for this slide, which is the schematic symbol. Just look at the circuit symbol at the bottom of this NPN box. In the NPN box, the current seems to flow out from base to emitter, while in the PNP transistor, the current seems to flow in from emitter to base collector. In both these NPN or PNP transistors, the principle of transistor action remains the same. That is, the emitter base junction, both for the NPN or PNP transistor, would always be forward biased. Now let's try to understand by keeping this slide in view. On the left, in the NPN schematic illustration, the emitter is a region which is N-type. So for a forward bias, we will connect this N-type emitter with a negative terminal of the battery, and the middle portion, that is the P-type base, would therefore be connected with a positive terminal, so that our understanding of the forward bias is not violated. Similarly, let's concentrate on the emitter base junction of the PNP transistor. The emitter, which is the P-type now for the right hand side transistor, would be connected to the positive terminal of the battery in accordance with the definition of the forward bias diode, and hence N-type base would be connected with the negative terminal. I always call it positive or negative, but you know, we understand very well that we have to talk in terms of, we can also talk in terms of the relative potential difference between N and P, between the emitter and base, so that for a forward bias, emitter should be at a higher potential than the base, which could be achieved in so many different ways, and we had already illustrated that when we were discussing the junction, PN junction diode. The current therefore would flow in the NPN transistor from emitter, from the base to the emitter, because now the base is the one which is connected with the positive terminal of the battery. I hope you do appreciate this subtle difference between the direction of the current from base to emitter for NPN and from emitter to base for the PNP. The arrowhead indicates the flow of direction. As we mentioned before, that according to a simple definition, the current would flow from positive terminal of the battery towards the negative terminal, that is from P to N, and that is why in the NPN transistor the current is now flowing from base
to emitter, because base is p-type base in the NPN transistor has been connected with the positive terminal of the battery. So having talked about the two type of transistors, that is NPN and PNP, their relative areas, base has to be smaller than emitter and collector has to be largest of all the three regions. As we mentioned before, that we deliberately make the emitter highly doped region, base we deliberately make very thin and less doped as compared to the emitter, and so on so forth for the collector. The collector happens to be larger in the area. Now this figure, these doping figures are indicated, have been quoted as a rough idea. This will give you a rough idea. What do we mean by a heavily doped emitter? What do we mean by a lightly doped base? And so on and so forth. So if you look, emitter doping is much higher, roughly of the order of 10 to the power 15, and the base doping is slightly less as compared to the emitter, but slightly higher as compared to the collector. So collector is the least doped, which is approximately 10 to the power 6, and base doping is slightly higher. That's why I've quoted the figure 7 to 8, but very less, as quite low as compared to the emitter. The reason why a collector is so lightly doped and why emitter is so heavily doped has already been discussed. It is the emitter which transfers or which emits the current. The emitter is the region from where the majority carrier starts to flow due to the forward bias emitter based diode, and then they are collected at the at the collector terminal. Collector plays no role in the sense why that is why it is lightly doped, because the base collector junction has already been made reverse bias. So we have two back-to-back joined diodes. One is the emitter base junction and the second is base collector junction. In the normal mode of operation, or simple in terms of the simple transistor action, the emitter base junction is forward bias, therefore the current would flow, and that forward bias current is then transported to or injected into the collector region through the base region, and collector simply collects that current, and that is why the collector doping is the least. Here is another illustration, because we shall be designing lots of devices by using simple diode circuits and simple BJT circuits, and therefore we try to show or understand or analyze these circuits a lot in our lectures on bipolar junction transistors. Again, I have shown you the not only the terminals marked emitter base collector, but now in this slide I have incorporated two more parameters, namely the biasing, the voltages applied across the forward biased emitter base junction, as well as the currents, which we because we have three terminals, emitter terminal, the base terminal, and the collector terminal, so we have three current components shown in this slide. And similarly, we have two voltages, one between the emitter base junction and second between the base and collector junction, and they are designated as VEB, the emitter base voltage. Let's just first understand the A diagram, the A circuit. The A circuit is valid for has been drawn for a PNP transistor, and as we mentioned before, the emitter base junction, which is the PN junction, has to be forward biased. So what do? We connect the P-type emitter region with a positive terminal of the battery. The battery now is VEB, that is the battery between emitter, P-type emitter, and N-type base. Thus, the negative terminal will be connected to the N-type base, and this makes the emitter base junction a forward bias junction for a PNP transistor. And as I mentioned in my previous slide, the current thus would flow from P-type emitter to the N-type base in accordance with a
conventional direction of the current flow, that is from the positive terminal of the battery towards the negative base region. Similarly, the base collector junction, let's concentrate on the base collector junction of the A circuit. Now, base collector junction is the N-type base and the P-type collector, and accordingly this would be reverse biased. So we have a reverse biased NP diode in which the base region now is at negative potential, and P-type region is at is relatively at a negative, relatively at a higher negative potential, and the base is at a positive potential. And the direction of the current, IB component of current, is shown downwards. I will in a minute explain why the current seems to flow out of the base region. The base current consists of the current due to the loss of electrons which takes place when, now let's understand this emitter current and the base current and the collector current first. I shall do so in a minute after having explained the biasing of the B diagram, which is now an NPN transistor. The voltages VEBE and VBC are very simple to understand, because just as in the PNP transistor the emitter base has to be forward biased, similarly in the NPN transistor also the emitter base junction has to be forward biased. So whether it is a PNP transistor or the NPN transistor, our first principle of transistor action remains the same, that is the emitter base junction must always be forward biased. For an NPN diode between an emitter and the base, thus it follows logically that N emitter, the emitter which is now an N-type semiconductor region, should be connected with the negative terminal of the battery VBE, which I have indicated in this diagram. Similarly, the base collector region accordingly would be reverse biased. So having chosen the appropriate biasing, whether it is a PNP transistor in the A circuit or NPN transistor in the B circuit, we understand the biasing now, how the emitter base and base collector junction should be biased so that the transistor is said to be in the normal mode of operation or in the active mode of operation. Let's now try to understand the three transistor current components and their respective directions. I use the terminology components because the total current then is something different which we shall learn in this lecture. Now, the current originating from the emitter region due to the flow of the majority carriers present in the emitter region. For a PNP transistor, the majority carriers in the emitter region would be the holes. In an NPN transistor, the majority carriers in the emitter would be electrons. So the flow of holes in the PNP transistor and flow of electrons in the NPN transistor from the emitter would constitute an emitter current. When this emitter current reaches the base, some of the majority carriers, when injected into the base, will recombine with the carriers present in the base, and hence there would be a loss of holes in the emitter, PNP emitter carriers, and loss of electrons in the NPN. So instead of calling NPN and PNP all the time, let's just zero it down to the emitter carrier and the base carriers. So some of the emitter carriers, when they reach base, they recombine with the majority carriers present in the base, and hence the emitter current will decrease when it reaches the base region. Now, to compensate for that loss of the majority carriers in the base, some electrons, in the case of the PNP transistor, some electrons will be injected by the bias, by the battery, into the base region to recover the loss of the electrons there, and hence this constitutes the base current. So basically, in very simple terms, base current is the
is the electrons or the carriers which are injected into the base to recover through replenish the loss of charge carriers, majority charge carriers within the base region. So the emitter current, which reduces slightly due to the recombination process within the base, and then the base is replenished, the base majority carriers are replenished by the battery, that constitutes the base current. So we have an emitter current and base current. Then from base, the majority carriers coming all the way from emitter, entering into the base region where their status changes from majority to minority carriers. Now these injected minority carriers coming from the emitter will then move into the collector region and collected by the field, reverse field, mind you, present in the base collector depletion region. But this reverse field is now favorable for the carriers coming, majority carriers coming from the emitter. So that is the simple operation, and accordingly you can see that what would be the direction of the current components. Now it's easy to understand the direction of the current components for the case of the PNP transistor, because holes coming from emitter, so the direction of the current component IE would be from emitter to base. Then the base, into the base we are injecting the electrons from the negative terminal of the VEB battery, therefore the current direction would be outward from the base, that is from base into the emitter, into the out from the base. And finally the collector current, because obviously it's collecting the holes coming all the way from emitter into the base, from base to the collector, so the IC would be along the base collector direction. And the same would apply for an NPN direction, because now the base current is into the base region and emitter current is from P to N, as I mentioned before. That is, now it is directed from base to emitter, and the collector current is from N to collector to base again. This is the reason for the arrowhead, as I had shown in my this schematic illustration in the round circle. You see, for the NPN transistor, the current is flowing from base into the emitter, and in the PNP transistor the current is flowing from P-type emitter into the N-type base. And the same terminology will be used throughout the bipolar junction transistors in all electronic circuits. So that is the basic basic circuit symbol, depending upon which carriers are moving in which direction. So if you can understand the flow of the carrier itself, then you can determine what would be the direction of the current itself. For holes is easy, because the direction in which the holes move, that will also be the direction for the hole current. But the electron current, that is the current components due to the movement of the electrons, would be opposite. So, but nevertheless, it's not such a big deal to appreciate what would be the direction of current component due to electrons. But in transistors we do not talk about the hole current or the electron current, rather we talk about the emitter current, because that in itself contains whether the current is due to holes or the current is due to electrons, similarly in the base region and similarly in the collector region. In other words, what we are trying to say is that is emitter current, the base current and the collector current in turn, वो भी emitter, base और collector आगे बजाते खुद hole और electron current components पर मुश्तमिल होती हैं. Okay, so what I have written here is that the emitter current therefore consists of a sum of two components, the base current and the collector current. If you look at the circuit symbol for PNP, then at the bottom I have shown you that the total current starting from the emitter, getting into the base and finally going to the collector.
या इसको आसान लफ्ज़ों में हम ऐसे समझते हैं कि कलेक्टर तक जो करंट पहुंची वो इतनी नहीं थी जो कि इमिटर से स्टार्ट हुई, थोड़ी सी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि बेस में रिकॉम्बिनेशन आपके इमिटर के मेजॉरिटी कैरियर्स की हुई। तो कितना लॉस हुआ उसको आपने कहा बेस करंट, बकिया जो पहुंची वो कलेक्टर करंट बन गई। तो इस मुनासबत से आपकी टोटल इमिटर करंट क्या हुई? दो करंट कंपोनेंट्स, द बेस करंट एज वेल एज द कलेक्टर करंट। और ऑब्वियसली आपकी ट्रांजिस्टर एफिशिएंसी अगर 1 हो, मैक्सिमम हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? द इमिटर कलेक्टर करंट शुड ऑलमोस्ट बी इक्वल टू इमिटर करंट, जिसका क्या मतलब हुआ कि बेस में आपके कोई लॉस नहीं हुआ या insignificant carrier loss हुआ due to recombination. So that's the efficiency factor, which is the ratio of the output current IC to the emitter current IE. So that's efficiency, जो कि हम अगले लेक्चर में हाइब्रिड पैरामीटर्स या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स की हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। तो इसी तरह अगर मैं करंट किरचॉफ लॉ फॉर करंट्स एंड किरचॉफ लॉ फॉर वोल्टेजेस लगाऊं, तो टोटल सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस प्रेजेंट इन द सर्किट मस्ट बी 0। और यहाँ पर हम डेजिग्नेट कर रहे हैं 3 करंट्स, क्योंकि आपके रिस्पेक्टिवली आप इसको इस तरह एक लूप में समझ सकते हैं कि द लूप बिटवीन द इमिटर बेस एंड द लूप बिटवीन द बेस कलेक्टर एंड द थर्ड लूप जिसका हम जिक्र किया करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द मोड, चलें उसका मैं बाद में जिक्र करूंगी। थर्ड लूप होगा बिटवीन दी कलेक्टर एंड द इमिटर रीजन। तो आपकी कितनी वोल्टेजेस हो गई? बेस इमिटर बेस वोल्टेज डेजिग्नेटेड एज VEB, देन आपके बेस कलेक्टर वोल्टेज डेजिग्नेटेड एज VBC, और तीसरा आपका टर्मिनल कलेक्टर इमिटर है तो वो वोल्टेज होगी VC। ऑल दीज 3 वोल्टेजेस मस्ट बी इक्वल टू 0। So VCE is equal to negative VEC, और the currents are, जैसे मैंने अभी कहा कि कन्वेंशनल करंट डायरेक्शंस हम कौन सी लेंगे, वो होंगी द करंट्स आर पॉजिटिव क्वांटिटीज व्हेन द ट्रांजिस्टर इज बीइंग ऑपरेटेड इन द फॉरवर्ड बायस मोड या फॉरवर्ड एक्टिव मोड। तो फॉरवर्ड एक्टिव मोड को या फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द डायोड को के साथ हम करंट की पॉजिटिव डायरेक्शंस को रेफरेंस डायरेक्शन लेंगे। और वही चीज़ मैंने इस ट्रांसपेरेंसी में दिखाई है। आपको 2 चीज़ें मैंने यहाँ समझा दी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड टू अंडरस्टैंड कि इसमें सर्किट सिंबल की फॉर्म में हमने ट्रांजिस्टर की वोल्टेजेस और ट्रांजिस्टर की करंट्स को लेबल किया है एज IB, IC एंड IE, और लेटर ऑन किसी स्टेज पे हम चल के देखेंगे कि IE, IB और IC ये फर्दर कंसिस्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल कंपोनेंट्स पर, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो करंट्स हैं वो कैरियर्स की डेंसिटी की वजह से चल रही है। अब ये वो चीज़ है जो मैंने पिछली उसमें जिक्र किया, पिछली ट्रांसपेरेंसी में मैंने क्या आपको दिखाया, मैंने करंट्स को लेबल किया था IE, दैट इज़ द इमिटर करंट, द बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट। अब इन करंट्स को अगली स्लाइड में मैं कोरिलेट करूंगी विद द कैरियर्स दमसेल्फ, चार्ज कैरियर्स की अपने चार्ज कैरियर्स की डेंसिटीज़ के साथ कोरिलेट करूंगी कि कैसे इमिटर करंट मुश्तमिल होती है इमिटर के कैरियर्स पर और बेस के कैरियर्स पर। ओके, सो लेट्स फर्स्ट सी कोरिलेट दिस current slide, which is the qualitative transistor action, with the circuit symbol of this this slide, which is circuit symbol, and this slide which shows you the transistor action. तो फिर से मैं वापस जाऊं तो A डायग्राम को, A सर्किट को हम पहले लेते हैं। तो ये क्या है A सर्किट? दिस इज अ PNP ट्रांजिस्टर, और PNP ट्रांजिस्टर में हमारा इमिटर फिर क्या हुआ? P टाइप हुआ, और बेस हमारा क्या हुआ? N टाइप हुआ। तो पहले इस डायोड को समझ लेते हैं, विच इज़ द इमिटर बेस डायोड, विच इज़ P एंड N रिस्पेक्टिवली। और हमने अभी बात की थी कि इमिटर को हेविली डोप्ड होना चाहिए ताकि पर यूनिट वॉल्यूम आपके ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स इंजेक्ट हो सकें इनटू द लाइटली डोप्ड बेस। तो अब मैंने 2 लफ्ज़ कैरी किए हैं इस स्लाइड से, हेविली डोप्ड emitter, which is P-type semiconductor, into the lightly doped base region, which is N-type semiconductor material. Okay, now we can understand this block diagram and
try to understand how the transistor action takes place, how the current flows in a given forward bias junction or in a given reverse bias junction. Right. So let's forward bias the first emitter base junction, first junction, which is the emitter base junction. Emitter, according to my previous slide, is heavily doped p-type region. To indicate the heavy doping, we use a plus superscript. So plus indicates a heavy doping, for heavy p-type doping for the emitter, and then I have shown you the n-type region. Now this slide gives you a lot of physical information about the depletion region parameter, characteristics of the depletion region. तो गौर से समझते हैं. अब आप डिप्लीशन रीजन को देखें, एन टाइप बेस और पी टाइप एमिटर रीजन के. तो मैंने एन टाइप रीजन में यानी बेस में मैंने ज़्यादा चौड़ा डिप्लीशन रीजन को दिखाया है, जबकि इसके मुकाबले में पी टाइप में जो रीजन है, उस इमिटर रीजन जो कि पी टाइप है, उसमें डिप्लीशन रीजन थोड़ा नैरो है. उसकी वजह यह है कि इवन दो एक्सेप्टर और डोनर आयंस की तादाद सेम है, लेकिन अब आपको ज़्यादा रीजन से वही डोनर अनकम्पनसेटेड डोनर हासिल करने हैं, जो कि इमिटर रीजन में सेम नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस कम रीजन से होंगे, ऑब्वियसली बिकॉज n इज लाइटली डोप, यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस इज कम एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ द होल्स इन द इमिटर रीजन विच इज लार्ज. तो इमिटर रीजन्स में ज़्यादा होल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, लिहाजा डिप्लीशन रीजन कम होगा, नैरो होगा चौड़ाई में. और एन टाइप पर चूंकि डेंसिटी डोनर्स की कम है बनिस्बत इमिटर के एक्सेप्टर की डेंसिटी के, लिहाजा डिप्लीशन रीजन थोड़ा सा इमिटर की निस्बत वाइड होगा. तो ये तो हो गई रिलेटिव विड्थ of the depletion region on the N side and P side respectively, which in this particular case happen to be the P type plus emitter region and N type base region. अब आगे चलते हैं. अब आप नीचे आ जाइए सेंटर वाली schematic illustration में. तो होल्स ज़्यादा हैं इमिटर में, और कितने ज़्यादा हैं? बहुत, और बहुत को मैंने पॉजिटिव के सिंबल से डिनोट किया है. सो हेविली डोप p-type emitter region now will have naturally large number of holes. तो दरमियान की डायग्राम में मैंने होल कंसंट्रेशन को दिखाया है. तो जो आपको होल की हाइट नज़र आ रही है, तो ये होल की कंसंट्रेशन है किसी रिलेटिव स्केल पे. अब जाहिर है इन इक्विलिब्रियम अंडर द लॉ ऑफ मास एक्शन, होल की कंसंट्रेशन पी टाइप रीजन में एन इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अगेन पी टाइप रीजन में इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ मास एक्शन विच इज इक्वल टू ni स्क्वायर. तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी कम होगी एज कम्पेयर टू द होल डेंसिटी इन दी पी टाइप रीजन. तो ये रिलेटिव आपको स्केल मैंने दिखाई है मेजॉरिटी कैरियर होल्स की और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की, किसमें? पी टाइप एमिटर रीजन में. यही सूरत हाल है एन टाइप बेस में. एन टाइप का मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बेस में, एन टाइप बेस में. तो कितने इसमें जाहिर है माइनॉरिटी कैरियर्स होल भी होंगे, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स होल बेस की निस्बत ज़्यादा होंगे बनिस्बत इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके इमिटर में मौजूद है. तो ये रिलेटिव डोपिंग डेंसिटीज मैंने दिखाई हैं. एन टाइप बेस, लाइटली डोप्ड एन टाइप बेस एंड हेविली डोप्ड पी टाइप इमिटर रीजन में. और आपको अकॉर्डिंगली एन साइड पे डोनर आयंस पॉजिटिव होते हैं, पी टाइप पे एक्सेप्टर नेगेटिव आयंस होते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिप्लीशन रीजन में क्या हुई? फ्रॉम एन टू पी. तो ये डायग्राम तो हमें अच्छी तरह क्लियर होगी. अब आप आइए बॉटम डायरेक्शन में. तो मिडल में जो मैंने आपको कैरियर डेंसिटी का एक प्रोफाइल दिखाया, दिस इज कॉल्ड कैरियर डेंसिटी प्रोफाइल, कि अगर आप उनकी स्पेस विच इज़ अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप कैरियर कंसंट्रेशन प्लॉट करें, तो कैरियर्स जो हैं वो आपके किस तरह प्लॉट हो रहे हैं. तो नॉन बायस्ड यानी अंडर इक्विलिब्रियम the whole concentration in a given region would be flat. Similarly, electron concentration, minority electron concentration in a given region would again be flat. अब आप आ जाइए बॉटम वाली स्लाइड पे.
So let's move on to the bottom diagram now, which shows the current now. तो टॉप पे मैंने ब्लॉक आपको फिजिकल स्ट्रक्चर दिखाया, बिल्कुल टॉप वाली स्लाइड में, टॉप वाली लाइन में मैंने आपको फिजिकल स्ट्रक्चर इमिटर बेस का दिखाया। दरमियान में मैंने इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन बोथ इन द इमिटर एज वेल एज बेस दिखाई। अब नीचे हम उन कैरियर्स की बात करते हैं जब डायोड जो है इमिटर बेस्ड डायोड ट्रांजिस्टर का, माइंड यू, क्योंकि अब हम ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, पीएन जंक्शन की बात नहीं कर रहे। तो इमिटर बेस्ड डायोड जब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो जैसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं क्या होता है कि डिप्लीशन रीजन आपका नैरो हो जाता है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है, तो और ज़्यादा होल्स, अब इस पर्टिकुलर केस में electrons from the base would be injected due to diffusion into the emitter region। इसी तरह holes emitter region के forward bias के तहत base में enter होंगे। तो जब वो electrons base से emitter में enter हुए inject होके, तो उन इलेक्ट्रॉनों ने इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों ने बेस वाले इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों ने होल्स के साथ रिकम्बाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि होल्स जो हैं वो मौजूद हैं पी टाइप बेस में, तो पी टाइप एमिटर में तो होल्स ही मौजूद हैं। तो जब बेस के इलेक्ट्रॉन पी टाइप एमिटर में दाखिल हुए, तो वहाँ पहले से मौजूद होल्स के साथ रिकम्बाइन करना शुरू कर दिया, और ये लिहाजा रिकॉम्बिनेशन की वजह से उनकी कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो गई। लेकिन ये कंसंट्रेशन हम पहले भी ये क्वालिटेटिव डिस्कशन कर चुके हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्मूलाज निकाल चुके हैं कि ये लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। तो वही मैंने एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आपको दिखाने की कोशिश की है। सो मेरी जो कर्व मैंने ई से मार्क की है, लेबल लेबल किया है, इसका मतलब है इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेस व्हेन दे एंटर इनटू द इमिटर रीजन, वहाँ पहले से मौजूद होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम हो गई। और ये कमी किस तरह दिखाई है? दिस डिक्रीज इज एक्सपोनेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन करंट, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अब आ गए थे बेस से इंजेक्ट होके, वो अब इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू हुए एक्सपोनेंशियली, लेकिन वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इमिटर में अपने भी तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो वो नंबर जो है वो जाके फिर उस नंबर से नीचे नहीं हो सकता। होल के लिए है कि अब आपके देखिए, अब रिलेटिव हाइट देखिए होल की तादाद की और इलेक्ट्रॉन की तादाद की। बेस में अब बेतहाशा होल्स इंजेक्ट हो गए हैं इमिटर से, बिकॉज इमिटर वाज हेविली डोप्ड। तो जो होल्स हैं इसी तरह होल्स भी रिकम्बाइन करेंगे, क्योंकि बेस में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी रिकॉम्बिनेशन इतनी ज़्यादा लॉस नहीं होगा रिकॉम्बिनेशन से, क्योंकि आपने बेस को इसीलिए नैरो भी बनाया और इसीलिए लाइटली डोट भी बनाया कि आपके इंजेक्टेड होल्स जो हैं वो बेस में ज़्यादा कम ना हो जाएं। तो ये रिलेटिव मैंने एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होल्स की बेस में और इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की इमिटर में आपको दिखाइए। अब आप दूसरे डायोड जो कि बेस और कलेक्टर के बीच में है बन रहा है उसकी तरफ देखें। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि जैसे कि दोनों इमिटर बेस और बेस कलेक्टर डायोड का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। फिलहाल इट्स एन आइडियल मॉडल टू अंडरस्टैंड कि जैसे कि दोनों इमिटर बेस और बेस कलेक्टर जंक्शन दोनों आइसोलेटेड थे, तो यही स्टोरी आपकी रिपीट होगी। लेकिन इस केस में देखिए कर्वेचर ज़रा देखें और उसको समझने की कोशिश करें। इंजेक्टेड बेस से इंजेक्ट होके इलेक्ट्रॉन गए, यानी इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, और इंजेक्टेड होल्स कलेक्टर से होल्स इंजेक्ट होके बेस में आए। तो इनकी कर्वेचर देखें वो मुख्तलिफ है बनिस्बत फॉरवर्ड बायस जंक्शन की। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कर्वेचर क्यों मुख्तलिफ है। फॉरवर्ड बायस जंक्शन में ये इंजेक्टेड कैरियर्स एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं, बोथ ऑन दी इन द बेस एज वेल एज इमिटर रीजन। यहाँ ये इन्वर्टेड हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आपके एन टाइप बेस और पी टाइप बेस में कुछ कैरियर्स पड़े हुए हैं, राइट। और जब होल्स इंजेक्ट होते हैं पी में
तो देयर इज़ अ सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ इंजेक्टेड होल्स इनटू द बेस, इसी तरह इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये इंजेक्शन होती है फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस हमने जो बेस कलेक्टर रीजन है वो हमने फॉरवर्ड बायस तो नहीं किया हुआ, बेस कलेक्टर रीजन इज रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस जंक्शन में जो आपके पहले से माइनॉरिटी जो पहले से होल्स हैं और पहले से पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन हैं, अब वो उनकी तादाद और कम हो गई, बिकॉज नेगेटिव फील्ड वुड स्वीप देम अवे, तो इसलिए वो बिल्कुल जंक्शन के पास उनकी तादाद बहुत कम होगी, एंड देन इट राइजेस स्लोली टू इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो जो मिडल वाली आपकी लाइंस हैं, यानी डेंसिटी मिडल वाली रिप्रेजेंटेशन में जो आपको कैरियर डेंसिटी दिखाई है, ये वो कैरियर डेंसिटी थी जो आपको इक्विलिब्रियम में मिलती है। यानी जब आपने इमिटर बेस जंक्शन और जब आपने इमिटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन को ना तो फॉरवर्ड बायस किया है और ना रिवर्स बायस किया है, यानी दोनों जंक्शंस में आपने कोई भी, यानी पूरे ट्रांजिस्टर पर आपने कोई भी बायसिंग नहीं की हुई। अब जब आप बायस करते हैं तो हम बात कर रहे थे समझाने की बेस कलेक्टर रीजन को, जो कि रिवर्स बायस्ड है। तो रिवर्स बायस में अब वो कैरियर्स जो इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन थे, वो अब आपके उनकी कंसंट्रेशन इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डिप्लीशन रीजन बहुत कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उनको स्वीप कर रहा है, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पी रीजन, एंड सिमिलरली, यानी आसान लफ्जों में अब वो माइनॉरिटी कैरियर्स स्वीप हो रहे हैं ज़्यादा आसानी से, क्योंकि फील्ड उनके लिए फेवरेबल है। तो माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो अब आपके स्वीप हो गए, लिहाजा इमीडिएटली क्लोज टू द जंक्शन उनकी कंसंट्रेशन कम होगी। लेकिन मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए ये रिवर्स फील्ड बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा, इसीलिए आपकी रिवर्स करंट में, रिवर्स बायस मोड में मेजॉरिटी कैरियर करंट नहीं चलती। सो इट्स ओनली द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन या माइनॉरिटी कैरियर करंट which has been shown to be very small next to the junction, and then it rises exponentially and reaches the equilibrium value. तो ये एक बहुत ही interesting slide है. This particular slide is quite significant in the sense कि ये आपको तीनों चीज़ें एक ही slide पे नज़र आ रही हैं. The relative doping of the emitter base junction and base collector junction, the relative carrier concentration of both the junctions, and then the relative concentration of electrons and holes, which is called as quasi concentration when the diode is forward biased and when the diode, the base collector junction is reverse biased. तो ये तीनों चीज़ें हम qualitatively understand करने के बाद we can appreciate how the current flows, the magnitude, we can calculate quantitative magnitude of the currents flowing in the transistor, namely the emitter current, the base current and the collector current, and later on we can even further go into detail. IE consists of hole as well as electron current and base current and collector current. तो अब इस ट्रांसपेरेंसी में हमने वही किया है जो हमने पहले दिखाया था कि यहाँ दोनों इमिटर बेस जंक्शन एंड बेस कलेक्टर जंक्शन को हमने अलग अलग दिखाया था। अब दोनों को हम करीब ले आए, तो करीब लाने से क्या है कि जो आपका एन टाइप रीजन दोनों साइड पे नज़र आ रहा है वो हम ओवरलैप करके दिखा रहे हैं। सो नाउ यू सी अ कंप्लीट PNP ट्रांजिस्टर जो कि कंसिस्ट कर रहा था पिछली स्लाइड पे दो PN एंड NP डायोड्स पर। मसलन ये हमने एक समझने की खातिर स्लाइड दिखाई थी, वही ट्रांजिस्टर है कंसिस्टिंग ऑफ टू डायोड्स नाउ जॉइंड टुगेदर, जिसमें कि N रीजन अब आपका कॉमन आ गया है। एक इस में थोड़ी सी कंफ्यूजन स्लाइड में आपको नज़र आएगी कि N टाइप बेस बहुत वाइड नज़र आ रहा है, हालांकि ये होता नहीं है। रियल ट्रांजिस्टर में हम इसको बहुत नैरो रखते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पिछली डायग्राम को चूँकि मैंने अब
करीब लाके इकट्ठा किया है, ट्रांजिस्टर बनाया है, इसलिए मुझे इसको स्कीमेटिक सेम उसको यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए पिछली स्लाइड की और इस स्लाइड की मुझे चौड़ा दिखाना पड़ा है बेस रीजन को, लेकिन इन प्रैक्टिस ये नैरो होता है। तो P heavily doped P region which is emitter and उससे लाइटली डोप्ड N रीजन को हमने फॉरवर्ड बायस किया है। बेस कलेक्टर रीजन विच इज़ N and P इन दिस केस को हमने रिवर्स बायस किया है। और अब आपके करंट कंपोनेंट्स वही हैं, लेकिन जब हमने इमिटर फॉरवर्ड बायस रीजन और रिवर्स बायस रीजन की करंट्स को आपने ज्वाइन किया है तो आप देखेंगे होल करंट फर्स्ट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एंड देन जाके ये रिवर्स बायस जंक्शन में ये एक्सपोनेंशियली राइज होती नज़र आ रही है। द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन राइजेज एक्सपोनेंशियली, द होल करंट डिक्रीजेज एंड द इलेक्ट्रॉन करंट इन द इमिटर रीजन। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने पिछली स्लाइड में समझी, सिर्फ हमने उन दोनों ब्लॉक्स को जो पहले हमने अस्यूम किए थे, फ़र्ज़ किए थे कि अलग अलग आइसोलेटेड हैं, अब हमने उनको कंबाइन कर दिया है। तो इमिटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस्ड है और उसकी स्कीमेटिक सिंबल इलस्ट्रेशन आपको दिखाइए कि वो फॉरवर्ड है, और रिवर्स बायस जंक्शन आपका दी बेस कलेक्टर जंक्शन आपका रिवर्स बायस दिखाया है, और वो भी स्कीमेटिकली रिवर्स बायसिंग भी शो की हुई है। दिस इज़ अ कलरफुल transparency and I like it because it also shows the relative widths of the depletion region between both the diodes, the emitter base as well as base collector diodes। तो जैसे मैंने पहले कहा था, बताया था आपको कि चूँकि इमिटर, अब ये मैंने एक ट्रांसपेरेंसी जिस लिटरेचर से पिक की है वो NPN ट्रांजिस्टर है, लेकिन नेवरदिलेस चाहे NPN हो या PNP हो, ये बात हमने अब काफ़ी दफ़ा दोहराई है कि इमिटर वुड ऑलवेज बी द मोस्ट हेविली डोप्ड। तो इस NPN ट्रांजिस्टर में हेविली डोप्ड रीजन जो है वो N होगा, तो लिहाजा ये N प्लस सिंबल से डेजिग्नेट किया गया है इमिटर को। तो आप देखिए कि N और P के बीच में जो आपकी डिप्लीशन रीजन है, जो मैंने डैश्ड एरिया से दिखाई है, वो कम है बनिस्बत डिप्लीशन रीजन के जो बेस कलेक्टर या PN रीजन के है, क्योंकि N region, N collector region, the collector which is N in this case and greenish blue is very lightly doped compared to the red base region। तो वो depletion region सबसे wide होगा, बड़ा होगा N type collector region में, और narrow होगा red यानी P type base region में। और similarly आपके N टाइप और P टाइप इमिटर बेस रीजन में। तो इस कलर ट्रांसपेरेंसी में हमने न सिर्फ इमिटर बेस जंक्शन की डोपिंग दिखाई है, द इमिटर बेस रीजन्स की विड्थ दिखाई है, बल्कि डिप्लीशन रीजन की भी चौड़ाई दिखाई है कि कहाँ डिप्लीशन रीजन किस रीजन में बड़ा होगा और किस रीजन में डिप्लीशन रीजन नैरो होगा। तो ये डिप्लीशन रीजन की नैरो होना या वाइड होना डिपेंड करता है। नैरो होगा अगर डोपिंग डेंसिटी हाई होगी, और वाइड होगा अगर डोपिंग डेंसिटी कम होगी। तो ये दोनों चीज़ें बैक वक्त दिखाई हैं, द रिलेटिव डोपिंग इन द इमिटर बेस रीजन्स, द रिलेटिव विड्थ्स ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन द इमिटर बेस जंक्शन एज वेल एज इन द बेस कलेक्टर रीजन। और राइट साइड पे आपका वही फेमस बहुत वेल नोन सिंबल है ट्रांजिस्टर का। चूँकि ये ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अब NPN मैंने चूज़ किया है, तो जैसे हमने पहले कहा कि एरोहेड यानी डायरेक्शन ऑफ द करंट इज़ डाउनवर्ड फ्रॉम बेस टू इमिटर। तो वही आपका एक्टिव रीजन, नॉर्मल ऑपरेशन इन द एक्टिव रीजन वही होता है कि अगर आप इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करें तो करंट फ्लो होगी फ्रॉम इमिटर टूवर्ड्स द बेस, और अगर बेस कलेक्टर को हम रिवर्स बायस करें तो बेस कलेक्टर जंक्शन में अपने कैरियर्स की वजह से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। तो लेट मी मेंशन वंस अगेन कि ट्रांजिस्टर एक्शन फिर होता कैसे है, कैसे हमें कलेक्टर में करंट मिलती है, ये कलेक्टर तक कैरियर्स कैसे पहुंचते हैं, जबकि आपने बेस
कलेक्टर को रिवर्स बायस कर दिया। लेट मी गो बैक टू दिस स्लाइड वंस अगेन। जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर आप इस कलर्ड ब्लॉक को देखें तो हमने सिर्फ इमिटर और बेस यानी ब्लू, डार्क ब्लू एंड रेड रीजन्स को फॉरवर्ड बायस किया है, तो जाहिर है वहाँ तो करंट चलनी चाहिए, इस जंक्शन में तो करंट मिलनी चाहिए। मगर हमने रेड एंड ग्रीन को हमने रिवर्स बायस कर दिया है, तो फिर बेस और कलेक्टर में तो आपको करंट नहीं मिलनी चाहिए। देन हाउ कम वी आर गेटिंग अ करंट इन द कलेक्टर लीड? ना सिर्फ वी आर गेटिंग अ करंट इन द कलेक्टर लीड, वी आर गेटिंग अ लार्ज करंट, तो जो कि बिल्कुल हमारे रिवर्स बायस जंक्शन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है। तो इसको हमने समझना है कि रिवर्स बायस जंक्शन में एक ट्रांजिस्टर में कैसे आपको एक रिवर्स बायस जंक्शन में करंट मिल रही है, न सिर्फ मिल रही है बट अ लार्ज करंट, quite a large current, you are getting quite a large current as perhaps equal to the current in the IC, could be as large as nearly equal to the emitter current। तो इस चीज़ को हमने समझना है। तो हम क्या कहते हैं कि फॉर ए फॉरवर्ड बायस पीएनपी इमिटर बेस जंक्शन, क्योंकि पिछली ट्रांसपेरेंसी में मैंने एनपीएन आपको शो किया था, लेकिन अब मैं पीएनपी लिख रही हूँ बिकॉज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट की डायरेक्शंस वही होंगी जो कि फॉरवर्ड बायस जंक्शन की होती हैं। द इमिटर इमिट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि होल्स हैं इस केस में, और वो बेस में इंजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में हम ये फिजिक्स डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी फॉरवर्ड बायस डायोड में, किसी भी फॉरवर्ड बायस जंक्शन में जब डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाता है फॉरवर्ड बायस की वजह से, तो फिर डिफ्यूजन इंक्रीज कर जाती है, इन्हांस कर जाती है। तो अब आपके होल्स पीएनपी ट्रांजिस्टर के इमिटर से बेस रीजन में डिफ्यूज कर गए, और देयरफॉर द टर्म द इंजेक्टेड कैरियर्स फ्रॉम इमिटर इनटू द बेस। सो कैरियर्स हैव बीन इंजेक्टेड इन द फॉरवर्ड बायस जंक्शन फ्रॉम इमिटर इनटू द बेस। अब क्या होता है कि कुछ होल्स, जैसे मैंने पहले बताया, इंजेक्टेड कैरियर्स कह लें, हमें नहीं मालूम, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो वो होल्स होंगे और एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दीज इंजेक्टेड कैरियर्स, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हों, वो जब बेस में जाएंगे तो वहाँ पहले से मौजूद मेजॉरिटी कैरियर्स के साथ वो रिकम्बाइन करेंगे। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस करंट। बाकी रिमेनिंग जो हैं वो दे विल मूव फॉरवर्ड ऑन। अब ज़रा गौर करें, पर्टिकुलरली फॉर द केस ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर, आपके इमिटर से क्या आ रहे हैं? होल्स। होल्स पहुंचे बेस में, अब बेस से वो होल्स आगे किधर जाएंगे? कलेक्टर, बेस कलेक्टर रीजन में, ये कलेक्टर में कैसे वो दाखिल होंगे? तो हमने क्या दिखाया था अभी कि एन टाइप कलेक्टर को, यहाँ तो कलेक्टर आपका एन है, लेकिन अगर ये पी होता तो आपने फिर भी बेस कलेक्टर जंक्शन को करना था रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस बेस कलेक्टर जंक्शन में होल्स के लिए ये अब जंक्शन, ये फील्ड अब आपके फेवरेबल है, क्योंकि पी को आप अगर तस्वर करें कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर था, तो पी को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं और एन को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो फील्ड की डायरेक्शन वही हुई जो कि होल्स को फेवर करेगी। तो इमिटर से आते हुए होल्स thus would enter into the collector region and hence a large current would flow even when the emitter base junction is reverse bias। To repeat it once again कि ये कलेक्टर करंट बेस कलेक्टर के अपने कैरियर से नहीं ओरिजिनेट हो रही, ये पीछे से आते हुए फॉरवर्ड बायस जंक्शन की करंट है, इमिटर बेस फॉरवर्ड बायस जंक्शन की करंट है जो अब आप कलेक्टर में वसूल कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांजिस्टर एक्शन का कि आपको कलेक्टर में लार्ज करंट मिल रही है, किस जंक्शन की? उसके नेबर में जो इमिटर बेस फॉरवर्ड जंक्शन मौजूद है। तो ये हम डायोड एक्शन को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि एक इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं
उसके साथ ही दूसरे जंक्शन को हम रिवर्स बायस कर देते हैं, दो वजूहात की वजह से, कि फिर आपकी करंट बेस कलेक्टर जंक्शन की करंट इंटरफेयर ना करे, रिवर्स करंट इंटरफेयर, फॉरवर्ड करंट बेस कलेक्टर की फॉरवर्ड करंट इंटरफेयर ना करे आपके इमीटर बेस जंक्शन के। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, जैसे मैंने अभी डायरेक्शन तो एक्सप्लेन कर दी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को हम क्या कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड वुड डिपेंड अपॉन द रिलेटिव डोपिंग। सो लेट्स read this again. For a PNP transistor, the whole current is collected into the negative terminal of the battery and is called the collector current. The magnitude of this collector current depends on how many holes have been captured by the electrons in the base region. ये वही चीज़ है जिसको मैंने राइट कर दिया इन नरेटिव, जो मैंने पहले कहा था कि इमिटर से जब होल चलेंगे तो कुछ बेस में जाके रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो कलेक्टर तक कितनी करंट पहुंची वो डिपेंड करेगा कि बेस में आपका कितना लॉस हो गया। अगर इनसिग्निफिकेंट या बहुत कम लॉस है बेस में तो ऑलमोस्ट तो करंट आपके कलेक्टर में ऑलमोस्ट वही होगी जो इमिटर से शुरू हुई थी। और हम इस लॉस को कम करने के लिए हमने दो चीज़ें पहले ही दो पैरामीटर जिक्र कर दिया था जिनका ट्रांजिस्टर फैब्रिकेशन में हमने ख्याल रखा था, नेमली the base should be made narrow as compared to emitter and as compared to collector, तो और भी नैरो होगा। और दूसरा क्या फैक्टर था कि हमने इसको इतना लाइटली डोप कर दिया, काफ़ी लाइटली डोप कर दिया था ताकि वहाँ कैरियर बहुत कम हो, लिहाजा जब कैरियर की कंसंट्रेशन बेस में कम होगी तो रिकॉम्बिनेशन भी कम होगी। तो इन दो पैरामीटर का हमने ख्याल रखा था ताकि आपके रिकॉम्बिनेशन बेस में मिनिमाइज हो सके और मेजॉरिटी ऑफ द कैरियर्स जो इमिटर से चले आ रहे हैं वो आपके कलेक्टर तक पहुँच जाएँ। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गई कि कैरियर के ट्रांजिस्टर में किस तरह करंट चलती है, even though one of the diode, which is the base collector diode, is reverse bias. So having discussed the transistor action or the operation of the transistor action and how current flows in a transistor, we can then show three different modes of biasing known as the transistor configuration, the transistor biasing configuration, or the transistor mode of three modes of transistor biasing. तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग के हम मोड्स डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉपर्टी और ऑपरेशन प्रॉपर्टी विच वी हैव इन माइंड। तो तीन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड तीन मोड ऑफ बाइसिंग कॉन्फ़िगरेशन है, दे आर नोन एज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें क्या होता है कि इमिटर बेस और बेस कलेक्टर जंक्शन में बेस की पोलैरिटी आपकी दोनों वोल्टेजेस में कॉमन होती है एंड दैट्स दी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर दो आउटपुट्स हम ले रहे हैं, दी वोल्टेज बिटवीन इमिटर बेस जंक्शन एंड द वोल्टेज बिटवीन बेस कलेक्टर जंक्शन, thus we have two potentials, VEB, emitter base, and base collector. Similarly, we have two current outputs, which is the emitter current I and collector current IC, क्योंकि बेस को आपने कॉमन ले लिया है, so that will not be a useful parameter. The base current will no longer be a useful parameter. इसी तरह कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एब्रीविएटेड फॉर्म में हम इसको CE कहते हैं, द इनपुट ऑब्वियसली, क्योंकि अब इमिटर आपका कॉमन हो गया तो इमिटर करंट और वोल्टेजेस, इमिटर वोल्टेज विल नो लॉन्गर बी, emitter current will no longer be a good parameter, so we have the potential between emitter and base VBE and the potential between collector and emitter VCE. तो अब emitter आप देखिए यहाँ कॉमन आ गया दोनों बाइसिंग में, जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका बेस कॉमन था ऊपर वाली पहली नंबर ऑफ पहली कैटेगरी ऑफ बाइसिंग में। एंड द टू गुड करंट कंपोनेंट्स आर IB एंड IC. अब IE will no longer be a good parameter. इसी तरह आपकी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास है VBC एंड VEC, क्योंकि अब कलेक्टर दोनों में बाइसिंग में कॉमन आ रहा है तो वो आपके VBC एंड BCE हो गया, और IC will no longer be a good parameter. तो अब आपकी इनपुट हो गई IB और आउटपुट हो गई आपकी IE, बिल्कुल उस तरह जैसे कॉमन इमिटर में आपकी इनपुट थी IB और आउटपुट थी IC. तो ये इस ट्रांसपेरेंसी में both voltages as well as currents have been indicated for input and output circuits
of the transistor, whether it is common base configuration, common emitter configuration और common collector configuration. तो ये तीन terminologies हम लेके आगे circuit analysis में डायोड ऑपरेशन ट्रांजिस्टर ऑपरेशन में ये हम terminologies बाइसिंग terminologies या बाइसिंग configurations की हम terminology यूज़ करेंगे in the transistor circuits and transistor operation. तो ये वही circuits हैं जो मैं पहले भी कई दफ़ा दिखा चुकी हूँ, PNP and NPN, लेकिन अब मैंने इनको दिखाया है common base and common emitter and common collector के लिए. I like to use PNP transistor as an example. It's easy to understand because the direction of positive direction of the current flow are the same as from holes. Flow of holes, the direction of the flow of holes indicates or gives you the positive direction of the current. Therefore, I choose the example of PNP transistor. तो PNP transistor को मैंने common base configuration में दिखाया है. You would understand that on the extreme left, the base, which is N-type now, is common, has been grounded, and the voltages are applied between the emitter and base, and the second voltage is again applied between the base and the collector. So we have VEB and VCB as input and output. Similarly for the common emitter configuration and common collector configuration. So having explained these three biasing configuration and showing you the relative direction of the currents flowing in these three biasing modes, we can then move on and show the common emitter configuration first. In this common emitter configuration, since the emitter is common, and we have when we discuss the currents flowing in the bipolar junction transistor and the hybrid parameters, that is the transistor characteristic parameter, then there are two characteristics for which we would like to mention for the common emitter configuration, namely the input, which is between the emitter base junction, the forward characteristic, which is almost the same as we had discussed and shown the exponential rise of the forward current in a typical semiconductor PN junction. And then we have the difference, of course, the interesting characteristic in the common emitter configuration is the output characteristic, which is between the applied reverse bias VCE and the current IC that you collect at the collector. So these two important parameters, these two set of characteristics are the base characteristic, the input characteristic, and the output characteristic, which is the current and voltages in the output circuit. And this we shall discuss in detail in our next lecture. This is a schematic illustration of a common base configuration, again showing you the potentials as well as the three current components, but in this diagram I have shown base to be the common, so I have chosen NPN, so in the relative directions of the currents and relative magnitude of the biases have been shown in this slide. The same transparency, the same kind of circuit symbol for common emitter, with the difference that now the emitter lead, the emitter terminal is now common to both the input and output circuit. Input circuit is the left loop and the right loop is your output circuit. So in the output voltage is VCC and the input voltage is VBB, and we have connected in this circuit I have also shown you a load, so that if we use this particular circuit for an amplifier circuit, then we can draw the voltage across the load RL. This is the most simplified version of an transistor as an amplified circuit. And obviously the base resistor has now been included
as we mentioned before, because we do not want to, we want to avoid the breakdown, passing too much forward current in the transistor or in the base region. Therefore, we include the load so that small, negligible milliampere of current flows in the forward bias junction. So a base resistor in this transparency shown as RS, a small resistor, is included so that to avoid the damage of the emitter base junction, and a large amount of load is included in the output circuit because we want to draw the voltage across this. We want to measure the voltage across this load and see its variation on the oscilloscope if we are using an AC signal, as we do in the case of the amplifier, DC amplifier, small signal amplifier circuits. Here is the same similar kind of transparency, but now showing a collector configuration, and you would appreciate that we flip the same circuit symbol depending whether we are trying to show a common emitter configuration or a common collector configuration. Now in this transparency, I have flipped the previous circuit where the emitter was downwards. Now I have shown the collector as being downward. Again, a representation now both for the PNP as shown on the top and NPN as shown on the bottom. I have tried to include as many as possible the circuit symbol for both PNP and NPN transistor, because this is the essence of this course on electronics, circuits, and their operation for devices consisting of single diode and consisting of transistor, bipolar junction transistor. So here is a different kind of illustration for both NPN and PNP, and again the biases and current components are also shown. This particular slide only shows the common emitter configuration both for the NPN and PNP transistors. Common collector, a different view for common collector both for PNP and NPN along with their circuit symbols, and finally I would come to show you the relative size, that how big a transistor is and what is the shape of a transistor. Nowadays the industry for the fabrication has advanced so much that very small size diodes are available commercially in the market of many different shapes, of many different sizes for you to choose. So I have as a reference, I have shown you a slide on the right side, extreme right side of this transparency, which gives you some, that is a relative idea of how big or how small the transistors have become from along the period of time when we first manufactured the very first transistor in 1948, and since then the size and shapes have significantly advanced. So here are some of the simple this transparency shows some of the very simple shapes as well as sizes of the transistors that are being used and available nowadays in the market. And also the data sheet that accompanies most of the commercially available transistors, that is components, indicates the identification of the terminal as well, which are three terminals: the emitter, base and collector, which are shown in this transparency. I do hope that having learned now to identify, define how the transistor is biased and how the transistor, why the current flows in a transistor, we are well equipped for our next lecture to discuss the active mode of the transistor operation, the cutoff mode of the transistor action, and the saturation mode of the transistor action. I have
tried to give you some flavor of the physical structure and with respect to their relative doping and their biasing, so that we can then move on to understand the various characteristics of the transistor, the input characteristic and the output characteristic, and various transistor parameters, whether the transistor for a given mode of biasing mode or configuration mode. So I look forward to meeting you again in my next lecture, where we shall talk about the transistor currents. Thank you so much for being attentive, and Allah Hafiz.